हाय एवरीवन वेलकम टू वॉइस आर ओडिया मीडियम। तो आज करवा आम सीडीपी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वन डायरेक्शनलिटी, लिनियरिटी, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो क्वेश्चन पचारे शिशुर विकास निम्नलिखित मध्य केउटा को फॉलो करुछि? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, एसर्जन और रीजन रही course of child's physical development is totally determined at the time of birth. Reason देचे heredity is the factor responsible for development of children. तो एसर्जन रे कही कि गोटे शिशुर शारीरिक विकास दिग संपूर्ण रूपे तार जन्म समय ही निश्चित होता है। रिजन रे कही केवल वंशानुक्रम होची शिशुर विकास पाई उत्तरदायी। तो ऑप्शन ए दीजिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दीजिए ऑप्शन ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दीजिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दीजिए बोथ ए एंड आर फॉल्स। बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड डेक्स द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कंटिन्यूज to play an important role, but secondary agency of socialization decks also become important. तो एठार पचारे प्राइमरी एजेंसी क्योंटा और सेकेंडरी एजेंसी क्योंटा। तो फैमिली हो प्राइमरी एजेंसी एंड पीर एंड मीडिया हो सेकेंडरी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, एज पर जीन पियाजे चिल्ड्रेन एक्वायर्स द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन। जीन पियाजे अनुसार शिशु क्यों स्तर में अमृत चिंतन क्षमता विकसित करें? सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, इन जीन पियाजे's theory the tendency to see the world and the experience of others from one's own viewpoint is referred to as। जीन पियाजे सिद्धांत अनुसार अन्य जनक सांसारिक दृष्टिकोण को निज दृष्टिकोण देखा कौन कहुए? एडाप्टेशन, इगोसेंट्रिज्म, एनिनिज्म, इक्विलिब्रेशन। इगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट, according to Colbert's theory of moral development, the level in which moral understanding is based on rewards, punishment, and the power of authority figures is called। कोलबर्ग नैतिक विकास क्यों स्तर रिवार्ड पनिशमेंट उपर आधारित? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, फॉर्मल कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट, the importance of cultural tools such as language in cognitive development has been proposed by Dax in his Dax। cultural tools such as language cognitive development कल्चरल टूल्स हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट किपरि होता है बोलिए? लेब भाई अनुसार सोशल कल्चरल थ्योरी अनुसार कल्चरल टूल्स सच एज लैंग्वेज इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट, लेब भाइगोट्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रेन ऑप्शन लर्न पैसिवली थ्रू द प्रोसेस रिपीटेशन एंड रिकॉल, go through 8 sequence stage of cognitive development, have a lot of potential that includes things that they are able to do with support from others। Option D, are born with fixed intellectual ability at birth which cannot be changed। तो एठारे कहिछे have a lot of
potential that includes things that the ability to with the support from others. Next देखिबा in progressive classroom the teachers ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥାଏ କେଉଁଟା ଉଠି କରିଛି follow learning by doing approaches based on children interest follow the pedagogical repeat practice and rote memorization द्वारा नहीं ensure that all teaching direct towards examination द्वारा नहीं promote competition rather than collaboration नहीं follow learning by doing approaches based on children interest द्वारा शिक्षार्थी आग्रह द्वारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम टा होता है नेक्स्ट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग वन्स सेल्फ एंड नो वन्स थॉट्स इमोशन फीलिंग मोटिव्स इज कॉल्ड निज विषय रे थॉट इमोशन फीलिंग इत्यादि आनिबाटा कौन म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्पाटियल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस बेले निज विषय जानिबा पई कोन कह जाय इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लेब-वाइगोस्की अनुसार लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर नॉट रिलेटेड टू each other language and cognitive development take place independent of each other language facilitates the shared experience necessary for building cognitive process language development takes place after cognitive development language facilitates the shared experience necessary for building cognitive development next assessment for learning includes categorization and labeling of students in same ability groups understanding the process of students thinking finding out readiness level students assessment for बेले फॉर माने कौन फॉर्मेटिव डेवलप फॉर्मेटिवटा किभଳି ହେଇଥାଏ गठनमूलक assessment मूल्यांकन किभଳି ହୋଇଥାଏ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट थिंकर्स एंड फाइंडिंग आउट द रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आम गठनमूलक मूल्यांकन केतेबेले करिथाउ पढ़ाइला समय रे करिथाउ ऑप्शन 2 नेक्स्ट देखिबा statement that boys are intelligent while girls are compliant is an example of तो एठार कही बॉयज माने बुद्धिमान होता एवं गर्ल्स माने आज्ञाकारी होता तो एटा को कौन कह जाए जेंडर इक्विटी जेंडर स्टेरियोटाइप जेंडर इक्वालिटी जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी जेंडर स्टेरियोटाइप नेक्स्ट असेसमेंट शुड बी असेसमेंट किपरि हेबा दरकार ओनली क्वांटिटेटिव कम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्डाइज ओनली समेटिव ओनली तो नुहे ओनली नुहे स्टैंडर्डाइज भी नुहे कम्प्रिहेंसिव बेवा आवश्यक नेक्स्ट व्हाई शुड चिल्ड्रेन बी असेस्ड शिक्षार्थी मूल्यांकन क्योंपाई करा जाए टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रेन टू एनकरेज कंपटीशन चिल्ड्रेन टू आइडेंटिफाई एंड लेवल स्लो लर्नर्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस of teaching learning to improve the process of teaching learning point next inclusive education stress on option A enhance the potential of each student viewing option B viewing gaps in learning as deficiency option C assessing cognitive skill on the basis of academic performance option D setting same performance of learning and assessment of each child inclusive education कौन साहाय्य करथाई प्रत्येक छात्रर क्षमता को बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाई enhance the potential of each student next assertion and reason assertion when teachers believe that children coming from disadvantaged backgrounds have the capacities of learning and make the field belong
in the classroom they are likely to improve their performance। तो इन कही कि शिक्षक जानती जे डिसएडभांटेज बैकग्राउंड रू आसीथिबा छात्र छात्री शिखिबा पई आग्रह प्रकाश करूछंती सही छात्र छात्री माननको आहुरी इम्प्रूव करबा पई चाहंती। ठीक अछि। चिल्ड्रेन एंड देयर एबिलिटी इन्फ्लुएंस चिल्ड्रेन एटा मध्ये ठीक अछि। बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ए। नेक्स्ट, presentation of content in DEX facilitate DEX multiple wage learning of all children, multiple wage learning of special children only, uniform manner learning of all children, uniform manner learning of special children only। प्रेजेंटेशनटा क्योंथे हेल्प करता है? प्रेजेंटेशन माध्यम शिक्षार्थीर शिखिबा आग्रह प्रकाश होता है। मल्टीपल वेज और लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट विथ लर्निंग डिजेबिलिटी? क्या गोटे नॉट ए रेस्पॉन्सिबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट लर्निंग डिजेबिलिटी कहे? Allowance for frequent breaks between tasks, extending allowed time for test, providing a space with minimal distraction, standardized tests for assessment। Standardized tests for assessment। Next देखिबा, flexibility, fluency and originality of idea are typically identified characteristics of creative learners, convergent thinkers, rigidity of thoughts, autism। Creative learners। Next, teachers should focus on use of DEX assessment। Teachers should focus on use of DEX curriculum and DEX assessment। Fragmented and discontextual and summative, flexible and formative, uniform and normative। Flexible and formative assessment। Next, a teacher should enable students to become effective problem solver। Gender fair, inducing stress and tension, encouraging use passive memorization strategy, encouraging use analogical thinking। Encouraging use of analogical thinking। A teacher should enable students for become effective problem solver। गोटे शिक्षक छात्र की एक शिक्षक को छात्र को प्रभावी समस्या को समाधान बनाने के में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए? एनकरेजिंग माध्यम से क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्वर हो पारे शिक्षक। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड मेकिंग मीनिंग इन मिडिल स्कूल स्टूडेंट इज फैसिलिटेटेड थ्रू। मिडिल स्कूल छात्र मानकर ज्ञान निर्माण करने एवं मीनिंग मेकिंग करने एमानक भितर कहार प्रयोग करने दरकार? एक्टिव एक्सप्लोरेशन, सोशल इंटरेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन 3, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट, which of the following strategies will not facilitate conceptual understanding? Which of the following strategies will not facilitate conceptual understanding? Asking student to copy answer the backboards sheets। 9, asking students to explain the concept to peer, asking students to think or example or non-example, asking students to make linkage with previous concept।
केनटा गोटे नोट कही कॉपी करवा दरकार नहीं कही नेक्स्ट हाउ शुड मिडिल स्कूल टीचर डील विथ अल्टरनेटिव मिसकनसेप्शन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ignore them punish them reward them address them next during brainstorming and discussion children's initiative guess should be discouraged ignore punished facilitate brainstorming of children initiative guess and facilitate next the process of problem solving is facilitated by समस्या समाधान को सुगम करने कौन करवा उचित रेस्पॉन्स शीट देवा कन्वर्जेंट थिंकिंग फंक्शनल फिटनेस मेकिंग इनिशिएटिव गैस सी केते बेले प्रॉब्लम सॉल्वर हो पारिबो गैस जेते बेले से शिक्षार्थी गैस करिकरी शिखिबो नेक्स्ट competition among students in a middle room ऑप्शन ए दीजिए should be encouraged since creating कंपटीशन करने द्वारा शिक्षार्थी कौन कौन होता है कंपटीशन माध्यम आम ताकू विनर्स एंड लूजर कहवा कि नहीं इग्नोर करवा कि नहीं should be encouraged and since ताकू should be encouraged since it prepare student to fit into the competitive market based economy नहीं should be discouraged since it to increase the stress and anxiety of students thereby impairing their cognitive growth नहीं करवा उचित नुहे कारण ताकू संज्ञानात्मक विकास पई यह बाधा सृष्टि करिथाई ऑप्शन डी नेक्स्ट when children the emotion of desk their learning is likely to influence negatively shame fear joy humiliation केतेबेले शिक्षार्थी शिखिबा पई आग्रह प्रकाश करी ताकू लज्जा लगिले ताकू भय लगिले ताकू खुशी हेले कि से अपमान पाइले से जेतेबेले खुशी हुए से शिखिबा पई आग्रह प्रकाश करिथाय जय जय फियर दोचन जय when children experience the emotion of their learning is likely to joy positive next assertion and reason assertion देखिए promoting student to reflect on attributing their success and failure to internal factor helps them to work on themselves constructively student को तार सफलता और विफलता पई ताकू उत्साहित कले से काम करने आग्रह प्रकाश करे ठीक अच्छे रिजन देखिए इंटरनल एट्रिब्यूट्स ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर हेल्प्स इंडिविजुअल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय वर्किंग हार्डर सफलता और विफलतार आंतरिक गुण व्यक्ति को अधिक सक्सेस करने आगे नहीं थाए यह ठीक अच्छे बोथ ए एंड आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो यह सीडीपी किसी